question, please. Yes, please. So I represent the HR academia, and my job is to just create this sense of the futuristic of what is to come, and I keep countering the walls of, but it doesn't happen this way yet, you know. I would really like to know what kind of a vision, like a foreseeable future vision, can I create for the masses of my students? Some of them believe me. Some of the clients that I work with in my consultancies also believe me, but like for the late majority adopters, what is the time frame that we're at? When do you think that we really will be, in that disruption phase in management and policies? We are already there. We are not feeling it. I'll tell you very honestly, I don't know आप लोग कितने अपने बच्चों को बताते हैं, but GPS don't really matter. That's the worst thing in our lives. Just get out of those CGPA shells. हम अपनी organization में कभी GPA देखते भी नहीं हैं. We don't even care about GPS. They don't really matter. You can easily fake them. If you have a good memory, you can fake them easily. I'll tell you, we don't even. वो भी नहीं मरता, वो भी मैं बताता हूँ आपको. The problem is कि हम we don't even teach our students to write their own CVs. So अभी एक लड़की का इंटरव्यू किया था कुछ देर पहले, तो उसके दोस्त के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उसके CV पे फुटबॉल की गेम्स का था कि इंटरेस्ट फुटबॉल में है. तो मेरे दोस्त ने पूछा कि आपको कौन सी टीम अच्छी लगती है. उसने कहा किस चीज़ की? उसने कहा फुटबॉल की. उसने कहा मुझे तो नहीं पता. उसने कहा कि आपके CV पे लिखा हुआ है. उसने कहा हाँ जी, भाई ने कॉपी पेस्ट कर दिया था. Would you hire her? Never. If she is not even good enough to talk about, express herself in the best way, how would she represent your organization? How responsible would she be? She can never be. And that's the problem. कि हमारी लम्स के सारे CV एक जैसे नहीं देखे आपने कभी? फोटोकॉपियाँ नहीं देखी आपने? I bet कि 99% लोग कहने कि कोई मिस्टेक जरूर कॉपी पेस्ट की भी होगी वहाँ भी. I just don't believe in that. And that's the change you need to bring. So you need to tell your students GPS don't matter. So तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है. तालीम अकेली कुछ नहीं कर सकती है और तरबियत अकेली भी कुछ नहीं कर सकती. बट तालीम, so I would just answer this in one last point. मैं गूगल में जब गया पहली दफ़ा तो मैं एक वहाँ टॉप इंजीनियर को मिला. मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स. मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या पढ़ा हुआ है? मैं तो लाहौर से उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इससे पूछें ये क्या पढ़ा हुआ है? उसने कहा नहीं मैं मास्टर्स किया हुआ है फ़िलासफ़ी में. तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम पहले क्या काम करते थे? मैं शेफ़ था. तुम इंजीनियर कैसे बने? So he actually, the way he answered me was the best answer I've ever gotten. He said, I went to school not to learn the subject, but to learn how to learn a new thing. And that's what we need to teach our students. It's not about the subjects they're learning right now. They're actually obsolete. आज भी e-commerce पाकिस्तान का बेस्ट बिजनेस स्कूल नहीं पढ़ाता. आज भी दुनिया में इस वक्त $13 ट्रिलियन की ई-कॉमर्स हो रही है. $13 ट्रिलियन, नॉट बिलियन. $13 ट्रिलियन. बल्कि नसीर साहब मुझे सुबह एक कैलकुलेशन बता रहे थे मिलियन और बिलियन की. सर प्लीज़ अगर एक माइक प्लीज़ नसीर साहब को दें, जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट कि मिलियन और बिलियन में कितना फ़र्क है. फिर ट्रिलियन की कैलकुलेशन मैंने नहीं की, पता नहीं वो आप नसीर साहब शायद कर सकें तो बता देंगे. No, it's very simple mathematics that if you have a million and you start spending $1 a second, a million will finish in 11 days. $1 million will finish in 11 days. Yeah, and if you have a billion and you spend at the same rate, it will last for at least 34 years. 34 years. $13 trillion, just imagine the volume of business the world is doing on e-commerce and nobody's teaching here. So there's a huge industry academia gap, which is a GPA thing. And the problem is we are teaching them to become job seekers and not job creators. So we need to help them create jobs, not become a job seeker. And I think these are few things which HR as an academia needs to really take into account. I just address this question. I think the world is going towards experiential learning. So, MIT, IOBM, I know for a fact they are thinking about doing experiential learning, social sector MBA. And I think the more people go in that direction of learning by doing whilst you're at university,
I think what it will happen is that it will bring about a change in mindset of students. And also, I think for employers also, when we've seen the projects, what they have done, we'll be able to appreciate people for what they have done rather than the academic knowledge and grades. We are in an area of vocational training. Vocational training is all about practical skills and experience, and yet अब ज़्यादातर पॉलीटेक्निक्स और बीटेक इंस्टीट्यूट्स को करते हो ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं. It's hardly any practical vocational training, practical experiential learning that they do, which is something that we focus on. So I do get the challenge that you have is because you want to change the world to a state as it should be, and it's not what it is. But I think that the way to go about doing it is inculcate within the curriculum and everything more experiential learning, project-based learning, reduce the academic, theoretical, the teacher standing in front and giving the gyan and the wisdom to people, and rather than people learning through self-discovery. One thing on the timeline, I mentioned the timeline of disruption. When do you think 3D printing was invented? When do you think it happened? We heard about it now. When do you think it was invented? It was invented in mid-1970s. It took that much time for the technology, because होता है technology exponential grow करती है, 0.1 से 0.2, 0.04 इस तरह करके चलती है. At some point last 10 years, it grew beyond 1. And then every month, every year, it was exponential growth, and boom, it came from nowhere. It has existed for the last 30, 40 years in specific cases, specific examples, labs, universities. And now you can imagine that existed in 1970s. What technologies are there out there for the last 10, 15 years, which we don't know anything about, and boom, 5 years from now, they'll come in and they will disrupt complete business models. So there is no timeline. As they say, there is no future, there is no past, there is only the present. Life is about the present. So either you're doing something or you're not doing it. So I think instead of thinking whether it can happen or not, one has to be prepared, be very fluid, be very flexible. I think the principles that Badr mentioned, I think very, very relevant to that kind of world that we live in. सॉरी एक चीज़ ऐड कर दूं ऑन अ वेरी लाइटर नोट. मसला एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ही फिर HEC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसका. एंड आई एम श्योर दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन. बहुत सारे लोग IB एजुकेशन सिस्टम इसलिए नहीं अपने बच्चों को भेजते कि वो बाद में HEC की इक्विवेलेंस का और ये बड़ा मसला होगा. एंड ऑन द 3D प्रिंटर थिंग, जस्ट टू टेल यू, अभी पाकिस्तान में आप में से कितने लोगों ने घरों में रखा हुआ है 3D प्रिंटर? नहीं रखा किसी ने. वो रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप ला भी नहीं सकते, बिकॉज उससे पहले कि आप सोचेंगे पाकिस्तान में लाएंगे, PTA ने उसके ऊपर NOC की रिक्वायरमेंट डाल दी हुई है, बिकॉज दे थिंक टेररिस्ट कैन क्रिएट गन्स विद 3D प्रिंटर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो जस्ट इससे पहले कि आप अभी सोचते कि 3D प्रिंटर आएगा और हम इस्तेमाल करेंगे, you have to have an NOC from PTA to import that in Pakistan. So you can imagine the frustration. And I think a lot of it to do with Kareem yesterday. But it is a persistent thing, because Pakistan mein a lot of these things are illogical that happen and you don't understand it. But इनकी जो बात है वो मैं 100% agree करूँगा, and I'm not a technologist, which is, it is the order of things. It is not a prediction, it will happen, whether you like it or not. I think we can take other questions offline probably. Feel free to... I am from HEC, Director Regional Center, Karachi. So, just one comment on your question that HEC will ask about the equivalence. We deal with daily equivalence and attestation, and I have seen it here at the regional center. They mostly there is equivalence when come to us. There is no university exist in the world. Then what you suggest that if the students coming, we should not ask these things? We should ask credentials. And I mean कि ज़रूर उन स्टूडेंट को थोड़ा सा होता होगा इशू के वो थोड़ी देर खड़े रहते होंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी बेटर कि उन असल वो थोड़ा खड़ा नहीं होना होता. आई एम श्योर जो नादरा एग्जीक्यूटिव सेंटर किया उनको भी अंदाजा है. डेफिनेटली वी आर इम्प्रूविंग. आई कैन नॉट से कि एवरीथिंग इज राइट हियर कि वो जल्दी से मिल जाता होगा, लेकिन एक प्रोसीजर है, वी अडॉप्ट और वी कमिट. Actually, that's exactly the procedure we need to challenge, and we need to change that status quo.
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मुझे सुबह नसीर साहब ने एक और बात है, आई कुडंट बिलीव दैट कि नाइजीरिया का वीज़ा ऑनलाइन मिलता है, नाइजीरिया का, जहाँ से हम समझते हैं कि अफ्रीकन स्पैम आती है बहुत सर ज़्यादा। मैं आपको फिर हर कमेंट के ऊपर फिर कमेंट दूंगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतने लोग जो एजेंट्स हैं जो 20-20 25-25 हज़ार खरीद पे बच्चे को जो है बच्चों से लेते हैं और एचईसी का नाम ख़राब करते हैं। आप डू यू थिंक कि नाइजीरिया की तरह हम भी ऑनलाइन कर दें? और वो स्टूडेंट जिनको फॉर्म भी डेफिनेटली वो भी स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्म फिलअप नहीं करना होता, या वो दुबई में बैठे होते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में, वो पैसे पे करें 40,000 50,000 उन एजेंट्स को। We can certainly have a discussion on this. We हम say असफर से what कहेंगे we एक are session doing, रखते हैं। what we are doing, we are committed. We are again, I am saying this forum as well. We are helping the students, and we are committed. Thank you. मगर मैं आपको बता दूं चेंज बहुत स्लो है। इवेंचुअली मैं सॉरी आई एम क्वेश्चनिंग इट, बट द प्रॉब्लम इज उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पीपल आर नॉट स्टडिंग इन पाकिस्तान बिकॉज उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। जी सॉरी बाबर खुशनूद, बाय द वे सॉरी, आज तक गूगल ने ट्विटर ने कभी मेरी डिग्री नहीं चेक की बिकॉज दे डिडंट थिंक इट वाज एज रेलेवेंट, सो इट एक्चुअली इवेंचुअली डिग्रीज इरेलेवेंट हो रहेंगी। सो यू नीड टू एक्चुअली थिंक कि आपने रेलेवेंट अपने आप को कितना रखना है। ये जितने मैंने आपको लोग दिखाए हैं, अगर गूगल ने चेक नहीं की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड की हर यूनिवर्सिटी जो है वो रेफर करती है एचईसी को कि डिग्री प्लीज Universities वेरीफाई करके will all go दें। live. आखिर कोई तरीकेकार होगा, कोई मेंटेन, कोई स्टैंडर्ड होगा कि यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की हमारी तरफ रेफर ठीक करती है हैं। थैंक यू। देख लेंगे हम अपनी रैंकिंग अनकरीब अगले 10 साल में फिर। one question and comment as well. My name is Dr. Madad Ali Shah. I'm Vice Chancellor of first technical university established in Pakistan. The problem is actually trust, which we call actually e-trust. As you said that people are not going to international baccalaureate system. The main thing is exactly the same thing, you know, because many times even in Pakistan Engineering Council, they don't basically recognize their engineering degrees because some of the universities who are coming, even they are members of Washington Accord. So these things are basically, we have actually divided ourselves into silos, which you also pointed out in your discussion. So the main thing is that the talent and skill is not coming up. And you know, on the other side, we are more kind of ceremonial, and we are more giving value to these things, you know, which are basically something in written, fulfill Exactly. the formalities. जी, बिल्कुल। And that's why there are too much barriers. Once we finish these barriers, then exactly we'll, you know, just flourish in exponential style. जी। Thank you. आई थिंक असफर, अगर आप चले नहीं गए तो नहीं प्लीज। Thank you, Badr. I'll request Mr. Nasir Akhtar, the chairman of Infotech Group and also the chairman of Pakistan Software Houses Association, to please join us and present the plaques to our three learned speakers. First speaker is Mr. Malik Ahmad Jalal. Mr. Akashif Sultan of Oracle. Mr. Badr Khushnoot. In the end, I'm again grateful to all of you for your valued participation at today's HR Summit. The conference is adjourned. Please enjoy your tea.